Ever wondered what mornings in Germany feel like? Well, today I'm taking you on a walk. तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने घर के सामने पार्क पे ले चलूं। थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाएगा और घूमना भी। Because in today's time, staying fit has become a real challenge. और वो भी तब जब आप घर से दूर किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हो। घर का खाना तो भूल ही जाओ। और स्पेशली जब आप वेजिटेरियन हो तो ऑप्शंस अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे नहीं पता था कि आज मैं एक नया दोस्त बनाऊंगी। Her name is Malu and I had a great time playing with her as you can see in the video also. ये तो यहीं पे था मैं अपनी उसको देता हूँ फेंकेंगे Now, it was the time to say goodbye to Malu, and I said my farewell and moved on. Just then, I came across a small shop selling strawberries. A wave of happiness rose in my heart. I got so excited, I thought, why not buy some strawberries? Sit by the lake shore and just enjoy the moment. So I did. It felt like the perfect ending. And trust me, guys, whenever you get the chance to visit here, you must try the strawberries. They are incredibly sweet. I'm sure you will love them. और इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।